નમસ્કાર, હું છું પ્રિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો જનતા કી જાણકારી ન્યૂઝ. નજર કરીએ આજના સમાચાર ઉપર. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે એસએફએઆઈના મુખ્ય કાર્યક્રમ એસઓએમએસ 2025 એક્ઝિબિશનનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના કેબિનેટ અને કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. એગ્રી ઉદ્યમિતા થીમ આધારિત આ કાર્યક્રમમાં કૃષિ ક્ષેત્રના નવોત્થાન, ગ્રામ્ય ઉદ્યોગિતા અને જવાબદાર પત્રકારિતાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં એગ્રીટેક નવોચ્ચારો, નીતિ નિર્માતાઓ, સંશોધન સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિકવિદો અને ગ્રામ્ય પત્રકારો એક મંચ પર એકત્ર થયા હતા. તેઓએ સંબોધનમાં તેમણે ગ્રામ્ય પત્રકારો અને કૃષિ ઉદ્યોગકારોના યોગદાનની પ્રશંસા કરી અને તમામ પુરસ્કાર વિજેતાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. આ પ્રસંગે એસએફએઆઈના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજીવ ચક્રવર્તી, આઈએમએમએના અધ્યક્ષ રાહુલ મિરચંદાની, ઓએએમએના અધ્યક્ષ વિજય ઠાકુર અને ટેપમાના અધ્યક્ષ એમએન વૈદ્યનાથન પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ દરમિયાન એગ્રી જર્નલિઝમ એવોર્ડ્સ દ્વારા ગ્રામ્ય ભારતમાં અવાજ ઉઠાવનારા પત્રકારોને પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વિજેતાઓમાં પ્રિન્ટ ડિજિટલ કેટેગરીમાં અંગ્રેજી માટે પૂજા દાસ, મરાઠી માટે મુકુંદ તાઇપા પિંગલે અને હિન્દી માટે હિમાંશુ મિશ્રાનો સમાવેશ થાય છે. બ્રોડકાસ્ટ યુટ્યુબ કેટેગરીમાં હિન્દી માટે સુશીલ શર્મા, અંગ્રેજી માટે અનિશા જૈન અને મરાઠી માટે ધનંજય શ્રીરામ સનપનો સમાવેશ થાય છે. राजीव चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन. सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन 7 राज्यों में रजिस्टर्ड है और इसकी शाखाएं और इसके जो पार्टनर एसोसिएशन है वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं. हम लोग स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जिसको लेकर अभी बहुत चर्चा हो रही है, चाइना ने उसको बैन लगाया और बहुत सारी बातें चल रही है. हम लोग स्पेशलिटी फर्टिलाइजर पे पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और हमारे साथी पूरे भारत में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के जरिए फार्मर किसान का इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं और जो सक्सेस मिला है उस सक्सेस को अलग अलग जगह पर देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं. हम इस सक्सेस को सिर्फ देश में ही बात नहीं करते, हम विदेशों में भी बात करते हैं और हम पूरे विश्व का आह्वान करते हैं कि वो इस मॉडल को जांचे परखे और इसको अपनाएं. खास करके जो भारत के बारे में मैं डॉक्टर सुभाष बुदे, मैं विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट. आज ये यहाँ पे जो चर्चा सत्र की आयोजन हुआ है वो सॉम्स के ऊपर है. सॉम्स यानी सोल्युबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जहाँ हमारा मानना है कि जहाँ जहाँ बहुत उन्नत खेती हो रही है, महाराष्ट्र में बोली या कहीं दूसरे प्रदेश के दूसरे भागों में, वहाँ ये कॉन्सेप्ट का ही चलन ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट की मान्यता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करें. इसका रीज़न ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हम ट्रेसेबिलिटी भी कम कर रहे हैं, सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहे हैं और यील्ड भी बढ़ा रहे हैं. महाराष्ट्र में जहाँ इस कॉन्सेप्ट पे काम होता है वहाँ पे 4-fold 5-fold इनकम जनरेशन ज़्यादा हुआ है फार्मर्स का. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जाए और मैं सिपाही जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को वो एक इंडिया लेवल पे एक मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं. सर, खास करके केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार आपको किस तरह से सहायता प्रदान कर रही है, 9 मार्च पहुंचकर उपस्थित रहा, किस बारे में अवार्ड